Hello and welcome everyone in the social science class. Today we will revise chapter 19 and the name of the chapter is our state government. In this chapter we will discuss some major point that is the state legislature and its two houses, that is the legislative assembly and the legislative council. Then we will also discuss about the governor and its power. Then we will discuss the chief minister and his council of minister, union territories of India, and India is federal with a strong center. So first we will start with the introduction of the India. So India is the seventh largest nation of the world, extended over 3.28 million square kilometer. But for our administrative convenience, India has been divided into 28 state and 8 union territories. Each state had its own government, which is run on the line of the central government, and the union territory are administered by the President of India through the Lieutenant Governor or the Chief Commissioner. Both the central government and the state government are independent in their working, and the division of the power between the center and the state is on the basis of three lists, that is the union list, state list, or the concurrent list. Union list has 97 subjects, state list has 66, and the concurrent list has a 47 subject. The central government is more powerful as it has more power, more resources, and more finances. Still, the state government has an independent identity and a very important role to play in the Indian federal system. So now we will discuss about the state legislature. So state legislature has the two houses. One is the state legislative assembly or the Vidhan Sabha, and legislative council or the Vidhan Parishad. So legislative assembly is also known as the lower house and legislative council is also known as the upper house. Legislative assembly in a state work like Lok Sabha, and legislative council work like Rajya Sabha in state. So minimum strength of the legislative assembly can be 60 and maximum cannot be more than 500. And legislative assembly, the member of the legislative assembly are the elected one. They are elected by the people through the election after every 5 years. And mostly state of India have only one house, that is the legislative assembly, and only the 6 state of India have the legislative council, and the state which have the legislative council and legislative house, both the houses are, that is the Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Jammu Kashmir and Madhya Pradesh. It means कि इंडिया में मोस्टली स्टेट में दो एक ही हाउस है, ठीक है, स्टेट में एक ही हाउस है, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली. बट ओनली 6 जो स्टेट है इंडिया की, वहाँ पे 2 हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. तो वो स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर एंड Andhra Pradesh. Now we will discuss about the legislative assembly first. So legislative assembly, if anybody want to be the member of the legislative assembly, he must attain the age of the 25 year. And some seats are also reserved for the scheduled caste and scheduled tribes, and some seats are also reserved for the women too, like in Himachal Pradesh 50% seats are reserved for the women. And there is a fixed term for the legislative assembly, that is the 5 year, and after every 5 year there is the general election through which people elect their representative again, like chief minister and the ministers, other ministers. And like the Lok Sabha, the legislative assembly has a speaker or the deputy speaker who preside over the meeting of the assembly and conducts its business. So here is the picture from the parliament. A speaker used to sit in the center and he hold this meeting, and all the member of the ruling party and the opposite party sit and discuss the failure and the success of the policies of the ruling party. Then legislative council or the upper house, which is also known as the Vidhan Parishad,
It is a permanent house which cannot be dissolved, and the term of its member is 6 years, but 1/3 of its member retired after every 2 years. इट मीन्स कि जो विधान परिषद है उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते डायरेक्टली, और जो मेंबर्स होते हैं विधान परिषद के या लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनका भी एक फिक्स टर्म है जो 6 ईयर के लिए है. आफ्टर 6 ईयर जिनका भी टर्म कंप्लीट हो जाता है उन्हें रिटायर कर दिया जाता है और उनकी जगह जो है वो नए मेंबर आ जाते हैं. सो एवरी 2 ईयर में 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं जिनका 6 ईयर का टर्म कंप्लीट हो चुका है. देन द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 30 years. Now we will discuss the function of the state legislature. So main function is to make the law for the state on the subject mentioned in the state list and the concurrent list. जो state list और concurrent list में जो function दिए हुए हैं उनके ऊपर law बनाना या उसमें कुछ changes लाने हैं, ये काम जो है वो किया जाता है लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू. देन इट ऑल्सो पास द एनुअल बजट सो दैट कि सभी डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन या हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपना काम ठीक से कर सके, इसलिए जो है एनुअल बजट पास किया जाता है. एंड इट कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. दैट मीन्स कि चीफ मिनिस्टर अपने हेल्प के लिए बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर को डिपार्टमेंट शेयर करता है, तो उनके काम के ऊपर एक चेक रखने का काम भी जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर करती है. Now we will discuss the governor. So before discussing the governor, I would like to introduce this picture. This picture is from the governor of the Himachal Pradesh, his name is Bhandaru Dattatreya. So governor is also known as the Rajyapal, who is appointed by the president of the India for the 5 years. The term of the governor is 5 years and he is appointed by the president. There is no direct election for the governor. He is directly appointed by the president of the India. So minimum age to be the governor is 35 years, and all the administrative work carried out on the name of the governor. And like the president of India, at center, governor also perform many functions on the advice of the chief minister. Now we will discuss the power of the governor. So governor appointed the leader of the majority party as the chief minister. It means कि जब इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जो भी रूलिंग पार्टी जीती है उसमें से जो भी जिसको भी रूलिंग पार्टी आगे नॉमिनेट करती है चीफ मिनिस्टर के लिए, उसे अपॉइंट करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का होता है. देन ही ऑल्सो अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. देन ही ऑल्सो अपॉइंट द मैनी हाई ऑफिशियल in the state are made by the governor. Then he can address and dissolve the legislative assembly. Every bill which the state legislative assembly passes become the law only after the consent of the governor. It means कि कोई बिल जब legislative assembly में पास किया जाता है, तो जब legislative assembly में पास हो जाता है तो लास्ट में गवर्नर के कंसेंट यानी कि सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है. अगर वहाँ पे गवर्नर अपने कंसेंट दे दे तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है और फिर उसके बाद ही उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो गवर्नर का जो वर्क होता है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो गवर्नर कैन ऑल्सो रिड्यूस एंड पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड द क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल. तो यस, अगर किसी को किसी केस में क्रिमिनल केस में जो है पनिशमेंट दी गई है, लाइफ टाइम की पनिशमेंट दी गई है, तो गवर्नर जो है उसके जो जेल में अगर अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस भी कर सकता है और उसे पार्डन भी कर सकता है. Now we will discuss about the chief minister and his council of the ministers. So here I have posted a picture from the chief minister of the Himachal Pradesh and the council of his minister. So Jairam Thakur is the chief minister of the Himachal Pradesh right now, and this is a picture from where chief minister is discussing some matter or he is making any policy regarding for the welfare of the state.
So now we will discuss about the chief minister. So chief minister is the most important functionary of the state government. He enjoy the real power and he act as link between the governor and his council of the minister. Yes, जो council of minister होती है और जो governor होता है उनके बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, तो एज अ लिंक जो वर्क करता है वो होते हैं चीफ मिनिस्टर. और चीफ मिनिस्टर ही हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर रहेंगे उनको अपॉइंट करते हैं. गवर्नर उन्हीं की एडवाइस पे जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करती है. अब फंक्शन जो है दैट इज़ administer and maintenance the law and order in the state, execute law and decision made by the legislative assembly as well as the union government, formulate policies for the state activity, give advice to the governor, make law with the help of state legislature based on the state list and the concrete list. So these are some work that is done by the chief minister and the council of the minister. Now we will discuss about the union territory. So union territory means areas which are small in size and the population and they are directly controlled from the center government. So union territory where the administration is under the lieutenant governor or the chief commissioner only, which are appointed by the president of India. So India have 8 union territory, that is the Andaman Nicobar, Delhi, Ladakh, Jammu and Kashmir, Chandigarh, Dadar, Nagar Haveli and Daman and Diu, and Lakshadweep and Pondicherry. So in between all these union territories, Delhi have the special status because it is also the capital of India and it is also known as the Ant City, that is the national capital territory of Delhi, and it enjoy a special status unlike the other union territory where the administration is under the lieutenant governor or the chief commissioner only. So, and Delhi has also the elected assembly and council of a minister headed by the chief minister as well as the lieutenant governor. So our last point is that is India is a federal with a strong center. So here a word came federal. First we must know that what is the meaning of the federal. Federal means division of the power. So India has a federal government. Federal government means यहाँ पे power का division हुआ है. Power किसी एक के पास नहीं है. Center और state government में जो है वो power का division किया गया है. ठीक है. So that we call a federal सिस्टम. लेकिन यहाँ पे कहा गया है इंडिया इज अ फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर. दैट मीन्स जो सेंटर है उसकी पावर जो है वो स्टेट और जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है. ऑलराइट. सो सिस्टम हम देख लेते हैं इंडियन फेडरल का. दैट इज़ सबसे टॉप पे जो रहती है दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे नेशन के लिए लॉ बनाती है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर जो पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाएंगे. देन पावर का डिवीज़न होता है स्टेट गवर्नमेंट में. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर जो स्टेट को गवर्न करते हैं. ठीक है. स्टेट के लिए लॉ बनाएंगे, यहाँ के लोगों के बेनिफिट के लिए, एक पार्टिकुलर स्टेट के लोगों के लिए जो है बेनिफिट के लिए काम करेंगे. ठीक है. देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट को आगे जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है सो दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर वे में चलाया जा सके. ठीक है. तो आगे स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है जहाँ पे डिप्टी कलेक्टर या डीसी हम जिनको कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट को देखता है, वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करता है या उनकी नीड को कंप्लीट करता है. देन देयर इज़ अ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें पंचायत आ जाती है. ग्रास रूट कि गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है जहाँ पे जो पंच होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं. सो दैट्स इट. दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज द चैप्टर और लेसन 19. सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू.